So let's start now. Welcome everyone. So recently we have launched two classes. One class on the anatomy, one on the physiology. हमने अभी भी दो क्लास लॉन्च किया, राइट? एक एनाटॉमी की और एक फिजियोलॉजी की है. अब कभी कभी अगर आपको लगे कि यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, जैसे कि एनाटॉमी में कुछ समझ में नहीं आ रहा, वी विल डूइंग द रिकैप, राइट? डोंट वरी. हिंदी में, इंग्लिश में, वी विल कीप ऑन डूइंग रिकैप टिल यू अंडरस्टैंड द थिंग. अगर कोई टॉपिक ऐसा छूटा, आपको लगा यार समझ में नहीं आया, थोड़ा सा जल्दी हो गया, कॉम्प्लिकेटेड था, इफ द टॉपिक इज कॉम्प्लिकेटेड we will try to simplify it and we'll discuss again why, so that we can understand a proper way of the anatomy and the physiology. These two things are very mandatory for any clinical practice. बहुत जरूरी है. लाइक अभी तक हमने जितनी एनाटॉमी की क्लास की है, अभी हम एक दो दिन में उसका पूरा रिकैप करेंगे. विल डू रिकैप. ओके, एनाटॉमी का भी, क्योंकि हमें प्रीति जी ने बोला कि वी नीड रिकैप. विल डू दैट. और उसी तरह से टुडे वी आर स्टार्टिंग अवर फिजियोलॉजी क्लास. टुडे इज द डे 1. पहले हम देखते हैं व्हाट इज फिजियोलॉजी, व्हाट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी, राइट? हमें समझना होगा, हम समझेंगे क्या है इसमें, फिजियोलॉजी होती क्या है. सो राजेंद्र प्रसाद जी ने हाथ उठाया है. चलिए बाद में बात करते हैं राजेंद्र प्रसाद जी आपसे इन द लास्ट. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस विल टॉक द लास्ट. ओके, ह्यूमन फिजियोलॉजी. ओके, एक तो एनाटॉमी. एनाटॉमी में हम पढ़ते हैं मसल्स, अटैचमेंट्स, बोन, स्ट्रक्चर, बहुत सारी चीजें ऐसी पढ़ते हैं. बट व्हाट इज फिजियोलॉजी? इन द फिजियोलॉजी वी स्टडी फंक्शंस. उदाहरण के लिए एक उदाहरण देता हूं. लेट मी गिव यू एग्जांपल. इफ वी टॉक अबाउट द ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर क्या होता है? पहले हम देखते हैं कि ये हमारा एयर वे है. कैसे हवा आती है, हाउ द एयर एंटरिंग इन द बॉडी, हाउ द एयर going in the lungs, how the oxygen absorbing in the lungs, then how it's reaching to the blood vessels. ये क्या है? ये functions हैं, ये physiology है. This is the physiology. Let me give another example. So when we talk about the blood pressure, what is blood pressure? Blood pressure हम जानते हैं, systolic, diastolic blood pressure. Blood is running in the arteries. When the blood is running very fast, we are telling blood pressure. आखिर नॉर्मल कितना होता है, ज्यादा कितना होता है? द फैक्टर्स हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिंग द ब्लड प्रेशर और डिक्रीजिंग द ब्लड प्रेशर, वी कैन सी. आखिर वो कौन से फैक्टर हैं जिनके कारण हमारा बीपी घट जाता है, हमारा बीपी बढ़ जाता है? ये फिजियोलॉजी है. दिस इज कॉल्ड फिजियोलॉजी, राइट? फंक्शंस. वी नो दैट if the high blood pressure is there, it will do lots of disharmony. Heart attack क्या होता है? What is the heart attack? How it happen? The particular part of the heart is getting necrosed. हमारे the death of the particular part, that is called myocardial infarction. हमारे हार्ट के एक पर्टिकुलर पार्ट की सेल्स की डेथ हो जाती है, जिसे मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते हैं. मायोकार्डियम क्या होता है? हार्ट में देखिए काला काला भाग दिख रहा है. The particular group of the cells is dying. एक ग्रुप ऑफ सेल मर जाता है, तो हम कहते हैं कि भाई ये तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया. ये फिजियोलॉजी है.
इसे हम कहते हैं फिजियोलॉजी। आपने देखा होगा कि डॉक्टर ने कहा कि वाल्व बदलना पड़ेगा। व्हाट इज वाल्व? दिस इज द हार्ट हु इज पंपिंग द ब्लड, एंड here we are having mitral valve, tricuspid valve. What is the importance of the valve? ये valve देखिए कैसे दरवाजे की तरह होते हैं, और जब valve खुले रह जाते हैं तो blood leak होता है। So what is the valve? How it's working? What is pneumonia? Pneumonia में क्या होता है हमारे lungs में? ये lungs को कहाँ प्रभावित करता है? Where the pneumonia is affecting our lungs? Because the patient is coming to you and we should know what is the physiology. आखिरकार कहाँ हो रहा है? रेस्पिरेटरी सिस्टम में कहाँ गड़बड़ हो रही है? इन द एल्वियोलाई, जहां पर हमारी सांस भरी जाती है लंग्स में, एल्वियोलाई द एयर सैक, राइट, गेटिंग अफेक्टेड। व्हाट इज हैपनिंग देयर? कफ भर रहा है। फिजियोलॉजी मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द किडनी। हम किडनी की बात करते हैं कि हाउ द किडनी इज डूइंग फिल्ट्रेशन वर्क, मेकिंग यूरिन, एलिमिनेटिंग टॉक्सिन। किडनी फेलर हो गया तो क्या बढ़ जाएगा बॉडी में? क्या कर देगा वो? इफ देयर इज अ किडनी फेलर, व्हाट, which toxin will increase in the blood and doing the damage? Why the person suffering with the kidney become acidic, acidosis? किडनी कैसे फिल्टर करती है? यूरिन में क्या होता है? यूरिन टेस्ट में क्या करते हैं? ओके, what doctor doing while doing the urine test? How the formation of urine is happening through the kidney? What is the kidney stone? Where the kidney stone is located? किडनी स्टोन कहाँ फंस जाता है? और प्रोस्टेट में क्या होता है? What is happening with the prostate enlargement? This is all physiology. When we are eating the food, food is going and passing through the intestine. हमने खाना खाया और खाना हमारे इंटेस्टाइन से होकर निकला, कैसे पेरिस्टालसिस मूवमेंट करता हुआ आगे बढ़ गया। When you are suffering with the constipation, then what is happening? Then कॉन्स्टिपेशन हो गया, अब खाना नहीं बढ़ रहा, लूज मोशन हो गया तो क्या हो गया? सो दिस इज कॉल्ड पेरिस्टालसिस मूवमेंट व्हिच इज पुशिंग द फूड डाउनवर्ड, राइट? We can see how the food is passing from the stomach. Stomach is an elastic bag. How the food is going forward, खाना कैसे आगे बढ़ा, है ना? इसे कहते हैं द मूवमेंट ऑफ द स्टमक, द मूवमेंट ऑफ द इंटेस्टाइन, पेरिस्टालसिस मूवमेंट। इसे हम कहते हैं आंतों की गति। ये कहलाती है फंक्शंस, फिजियोलॉजी। इसे कहते हैं हम फिजियोलॉजी। जब एक व्यक्ति को ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, वी कैन सी दिस इज द बोन्स, डिजनरेशन ऑफ द बोन। वी कैन सी हाउ द बोन इज गेटिंग डिजनरेटेड, बिकमिंग पोरस। हमारी हड्डियां कैसे पोरस हो जाती हैं, कैसे कमजोर हो जाती है। द चांसेस ऑफ द फ्रैक्चर इज इंक्रीजिंग विद द पोरस बोन। यू कैन सी दिस द पोरस बोन। So in the physiology we are discussing these all things. Let's talk about the muscles. मसल की बात करें, मसल कैसे, क्यों मूव करती है, कैसे मूव करती है? व्हाट इज इनसाइड द मसल्स? मसल फाइबर में क्या होता है, कैसे मूवमेंट करते हैं, है ना? और उसमें गांठें बन जाती हैं जिसे हम ट्रिगर पॉइंट कहते हैं। There is a formation of the nodule in the muscles called trigger point. So this is called the physiology of the muscular system, how the muscles are working under the control of brain, under the control of nerves. Okay, तो हमारी मसल कैसे काम करती है? ये हमारा मस्कुलर सिस्टम है। Then we can see nerve from the brain. हमारे ब्रेन की नर्व्स क्या करती है? द नर्व ऑफ द ब्रेन इज गिविंग द ऑर्डर। हमारे नर्व की, हमारे ब्रेन की नर्व ऑर्डर पास करती हैं, एंड दिस ऑर्डर इज गोइंग अहेड। हाउ द अवर मसल्स आर फॉलोइंग दैट ऑर्डर? व्हाट इज द फिनोमिना?
ये सब कहलाता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या होती है? आपने सुना होगा, एक डिसीज है DMD, डिशेंस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। व्हाट इज हैपनिंग इन द मस्कुलर डिस्ट्रॉफी? मसल कैसे कमजोर होने लगती है? ये सारा कहलाता है फिजियोलॉजी। ओके, फिजियोलॉजी। रिगार्डिंग माय पॉइंट, व्हाट इज फिजियोलॉजी? फिजियोलॉजी मींस फंक्शंस। कि आपने देखा, आपके सामने एक मशीन रखी हुई है, देखने में तो बड़ी सुंदर है, लेकिन चलती नहीं है। You have one machine or you have air condition in your home, but it's not working. Work means function. Function means physiology. So how your lungs working, heart working, how is your kidneys working, how your liver is working, how is your brain is working, nervous system is working, muscles are working. These all are called physiology. इन्हें हम कहते हैं physiology, human physiology, right? तो जब हम बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम की, लेट्स टॉक अबाउट द एंडोक्राइन सिस्टम। व्हाट इज हाइपोथायराइड? व्हाट इज हाइपरथायराइड? TSH की वैल्यू बढ़ती है तो हाइपो कहते हैं। क्यों कहते हैं? बढ़ती है तो क्यों कहते हैं? सो दिस इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। व्हाट इज द कनेक्शन ऑफ द थायराइड विद द बोन्स? व्हाट इज द कनेक्शन विद द थायराइड विद द इंटेलिजेंसी? इसे कहते हैं फिजियोलॉजी। ये एक बहुत जरूरी पार्ट है जो हर क्लिनिशियन को आना चाहिए। आप आज नहीं तो कल सीखेंगे इसको जरूर, राइट? सो दिस हमारा एक छोटा सा, because as per the need, as per the demand, there are many licensed practitioners, they want to learn physiology, so we are launching this course for all of you. Okay, और फीस भी इतनी नॉमिनल रखी है ना कि किसी के सिर पर कोई जोर ना। इट्स फीस द लेस देन 4,000 for the 2-month course, Monday to Saturday, and we'll also provide the recordings. So today is the introductory class. आज हमारी introductory class, right? So let's start this class. Okay. पेन लिख रहे हैं, स्पॉटलाइट है। So today we are starting about the physiology. Okay, what is the physiology? The physiology means the detailed description of each and every organ of our body, how they are working, the normal function of the each and every system. Okay, how it impact in our health. If there is any alteration in the system, okay, कहीं पे भी हमारी जो ये सिस्टम है उसमें कोई भी चेंज आता है, इट लीड टू सम डिजीज, तो हमें कोई बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी आपको नॉर्मल पता होगा तो उसमें आप एबनॉर्मल ढूंढ पाओगे, तो राइट। पहले आपको नॉर्मल पता होना चाहिए, क्योंकि एबनॉर्मल का तो बहुत कुछ है। मतलब आप जैसे जैसे एक्सप्लोर करोगे, देयर आर न्यू 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 डिजीज। ओके, so first to understand what is the normal physiology of our human body, okay, then you able to see any other different disease। कोई भी नया डिजीज है, आपको अगर नॉर्मल फंक्शन पता है, ठीक है, तो आप ये तो जान पाओगे कि ये एबनॉर्मल फंक्शन है इस ऑर्गन का। ठीक है, तो एबनॉर्मल जानने के लिए नॉर्मल जानना बहुत जरूरी है सबसे पहले। सो हमारे बॉडी में हाउ आवर बॉडी बिकम, ओके, हमारी बॉडी कैसे बनती है, ठीक है। तो द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मीन्स देर आर लेवल टू ऑर्गेनाइज द बॉडी। ओके, देर आर टोटल 4 लेवल: केमिकल और मॉलिक्यूलर लेवल, द सेल्यूलर लेवल, टिश्यू लेवल
and the organ. These are 4 steps our body to become the one organism, one whole body. There are 4 steps. Okay. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, like whenever we talk about the whole human body, we know that whole human body has formed with a one cell that is called zygote. हमारे संपूर्ण शरीर का निर्माण एक सिंगल सेल से हुआ है और उस सेल का नाम है जाइगोट. Zygote is like a seed of the tree. Like the seed of the tree can create the entire plant. एक छोटा सा बीज पूरे प्लांट की रचना कर सकता है. In the same way, one single cell is having DNA, one single cell is having entire information, and by the multiplications, it can form an entire human body. So on the one side, we can see a one atom, a very small unit. Even atom is invisible. And on the other side, we can see the entire human body. And from the one atom, there is a formation of the entire human body. So this is the journey. This is the journey how they are doing multiplication and becoming a full body. So we will be discussing this now. अब हम इसका अध्ययन करेंगे. So first of all, chemical and the molecular level. In the chemical level, सबसे पहले आप फोटो में देख सकते हैं कि the first one is the atoms. The atom is for like hydrogen atom, carbon atom, or a nitrogen atom. The atom get together, they join together and form the one molecule. So the molecule come together and form the DNA. Okay. So in the cells, there is a DNA. Okay. The DNA, it is present inside the nucleus. The nucleus is the main portion of the cells. Okay. So the nucleus have a DNA. Each and every cells have their own DNA. Each and every DNA are different from each other. So DNA is most important thing. वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है. ठीक है. न्यूक्लियस हमारे सेल्स में कोई एक सेल है, उसके सेंटर में होता है, उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब भी हम बोलते हैं ना कि बताइए कि हमारे शरीर की सबसे छोटी यूनिट कौन है, तो हम कहते हैं सेल. हम सेल से स्टार्ट करते हैं जनरली कि हमारे शरीर की सबसे छोटी यूनिट कौन है, सेल. सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी. लेकिन अगर हम सेल की बात करें, सेल कोई सबसे छोटी यूनिट नहीं है. अब आप देखिए सेल में क्या होता है, व्हाट इज इनसाइड द सेल. सेल में डीएनए होता ही है डीएनए. आप देखिए इफ there are many times in the hospitals, if someone want to find out that they are taking your hair or they are taking your one body cell and they are looking the DNA, then if someone is dying, then they are want to find out that this person belong to you or not, so they are matching the DNA. जैसे किसी के घर में कोई एक्सपायर कर गया, अब समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये अपना है कि नहीं है. आजकल तो ये बहुत कॉमन हो गया है कि आपका डीएनए लेते हैं. कैसे लेते हैं, एक सेल से. हमारी द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड वन सेल, बट इनसाइड द सेल देयर इज ए डीएनए which is very unique and which is very unique for different persons. हम जानते हैं कि आपका डीएनए अलग है, मेरा डीएनए अलग है, और किसी दूसरे व्यक्ति का डीएनए अलग है. एवरी पर्सन इज हैविंग डिफरेंट डीएनए. So we can tell कि one cell is formed by the fusion of multiple molecules. एक सेल का भी निर्माण जिसे सबसे छोटी यूनिट माना जाता है, मल्टीपल मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हुआ है. Inside the cell we can see lots of things. We can see nucleus, we can see DNA, we can see Golgi apparatus, mitochondria. हम जब साइंस की क्लास में थे, आप जब साइंस की क्लास में होगे, आपने पढ़ा था ना कि सेल क्या होती है, सेल में क्या क्या होता है. सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सेल में न्यूक्लियस होता है, सेल में न्यूक्लियोलस होता है, सेल में गोल्गी एपरेटस होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है. मतलब इतना सारा स्ट्रक्चर होता है. मींस सेल, we are telling the smallest unit is cell, but if we go little back, so even we'll find the subtler unit. लेकिन इतना जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो हम कह देते हैं
कि the smallest unit of the human body is cell, right? So now we will be moving to the next here कि जब हम सेल की बात करते हैं, अब सेल को हमने मान लिया कि हमारे शरीर की स्मॉलेस्ट यूनिट सेल हो गई. नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट स्टेप फ्रॉम द सेल. अब हम सेल के थोड़ा ऊपर गए, क्योंकि जाइगोट एक सबसे छोटा मॉलिक्यूल है, सबसे छोटी सेल है. अब जाइगोट ने मल्टीप्लीकेशन करके अब आगे क्या किया? सो दिस द नेक्स्ट लेवल. Okay. So the cellular level, the cells are come together and form the tissue. How the cells are work? The cells are going to the multiplication or division. Okay. Every cells have their own life expectancy. Okay. हर सेल की अपनी एक मर्यादा होती है. ठीक है, वो उतने टाइम तक ही लाइव कर पाता है. ठीक है, सेल्स कम टुगेदर, दे आर डिवाइडिंग. ओके, वो डिवाइड होते हैं, वो प्रोड्यूस होते हैं न्यू सेल्स एंड दे कम टुगेदर एंड फॉर्म द टिश्यू. सो इसमें क्या हुआ कि हमारी अब सेल ने क्या किया? सेल ने डिवाइड हुई, सेल मल्टीप्लाइज. नाउ मेकिंग द टिश्यू. व्हाट इज द टिश्यू? टिश्यू मींस स्किन. व्हाट इज स्किन? स्किन अब हमारा टिश्यू हो गया. वी कैन सी देयर आर लॉट्स ऑफ टिश्यूज लाइक मसल इज द टिश्यू. तो हमारे शरीर में आप बताइए, आप एक चीज सोचिए. आप, आई वांट टू आस्क यू वन थिंग हियर कि अगर हम एक हार्ट की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द हार्ट, हार्ट में क्या क्या है बताइए? स्किन है, दैट इज वन टिश्यू. ब्लड वेसल्स हैं, दैट इज अनदर टिश्यू. ब्लड है, दैट इज अनदर टिश्यू. हार्ट के अंदर बहुत सारी चीजें, थोड़ा फैट भी है, दैट इज अनदर टिश्यू. यू कैन सी एनी स्ट्रक्चर. सो व्हाट इज हैपनिंग कि अब सेल ने क्या किया कि कहा कि सेल ने कहा कि मुझे हार्ट बनाना है. ओके, सेल ने सोचा, सो मल्टीप्लाई होकर टिश्यूज बनाए, डिफरेंट टिश्यूज. राइट, सेल को किडनी भी बनाना है, तो मल्टीप्लाई होकर उसने एक कुछ अलग टिश्यूज बनाए. सो व्हाट इज द टिश्यू? टिश्यू मींस नाउ वी कैन टेल स्किन इज द टिश्यू, राइट? ब्लड वेसल्स इज द टिश्यू, ब्लड इज द टिश्यू, ये सब टिश्यू. एक कंप्लीट यूनिट. मसल इज द टिश्यू, ये टिश्यू. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? ये बात समझ में आती है सबको कि टिश्यू बन गए. अब टिश्यू के बाद अगला स्टेप आएगा. अब हम बात करेंगे द नेक्स्ट स्टेप फ्रॉम द टिश्यू, बिकॉज वी आर गोइंग वन बाय वन, वी आर मूविंग अहेड वन बाय वन. नाउ फ्रॉम द टिश्यू, नाउ देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ वन ऑर्गन. अब हम ऑर्गन की बात करें कि देखो हार्ट कैसे बन गया. हार्ट, देयर आर मेनी टिश्यूज आर यूनाइटिंग टुगेदर एंड मेकिंग द हार्ट. There are we can see in the heart we have skin, we have fat, we have blood vessels, we have multiple things in the heart. In the same way, आप किसी भी स्ट्रक्चर को देख लीजिए, you can see your kidney. Kidney is an organ, like, but kidney is made by lots of things. So tissue are forming and making one organ. तो ऑर्गन कब बनता है? जब बहुत सारे टिश्यू जिनका फंक्शन सिमिलर, जैसे कि फैट टिश्यू. ओके, तो फैट के टिश्यू है जिनका फंक्शन है कि फैट प्रोड्यूस करना, फैट अक्यूमुलेट करना. सो दे आर कम टुगेदर एंड फॉर्म द फैट टिश्यू. जैसे कि हमारे स्किन के अंदर का जो लेयर है, ओके, दिस इज द फैट टिश्यू. ओके, मसल टिश्यू, ओके, जिनका सिमिलर वर्क है कि वो मसल की तरह एक्ट करते हैं. दे कम टुगेदर एंड फॉर्म द वन मसल. ओके, सो हाउ the tissue is coming to the organ. Now at the organ level, so the organ are including, for example, heart, lung, liver, brain. Okay, our stomach, our intestine are the organs. Okay, the organ are come together, they are located in the proper alignment, the proper functioning, and they form the body. तो अब हमने देखा कि हमारे शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के ऑर्गन बन गए. हार्ट तैयार हो गया, किडनी तैयार हो गई, हमारा लंग्स तैयार हो गया, हमारा गॉल ब्लैडर, लीवर तैयार हो गया, और फिर सबको एक सही अलाइनमेंट में बॉडी में बिठाया गया और शरीर का निर्माण हो गया. सो द डिफरेंट ऑर्गन already formed. Now each and every organ
has been placed in the proper alignment in the human body. So now this is the formation of the whole human body. Now, if you are running, you are using multiple organs together. When you are running, you are using your muscles, you are using your bones, you are using your blood, you are using multiple organs together. So now there is a formation of the human body. एक अब आपके संपूर्ण शरीर का निर्माण हो गया. इस संपूर्ण शरीर के निर्माण में सारे ऑर्गन्स ने अपना अपना योगदान एक साथ दिया. ऑल द वर्किंग टुगेदर, ऑल द ऑर्गन डूइंग द टीम वर्क एंड मेकिंग यू ए एंटायर डायनेमिक हेल्दी ह्यूमन बॉडी. हाँ, अभी आ रही है? Now you can hear? Okay. So now we are moving step by step because our target to discuss all the system, like our target to discuss nervous system, endocrine system, our target to discuss each and every system, but we are going step by step. अब हम बात करते हैं कि अब हमारे और बॉडी में सारे ऑर्गन्स को हमने बहुत ही अच्छी तरह से प्लेस कर दिया. We have placed all the organ in a very aligned way, right? In a proper way. Now we are talking about the very wonderful condition. This is the next condition. So the homeostasis. The homeostasis मतलब उसमें क्या होता है कि हमारी जो homeostasis में बेसिकली क्या होता है कि हमारी बॉडी, ठीक है, हमारे बॉडी का ये सब जो एनवायरनमेंट है, इट इज अ सराउंडिंग एनवायरनमेंट, वो हमारी बॉडी के लिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो गया. हमारी बॉडी का अंदर का जो एनवायरनमेंट है, दिस इज द इंटरनल एनवायरनमेंट. तो बेसिकली क्या होता है, हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है, ठीक है, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी इज द कांस्टेंट, इट इज अ सिंगुलर, इट इज एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. वो हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जैसे कि ठंडी होती है, जब ठंडी बढ़ जाती है, कोल्ड बढ़ती है, तो हमारी बॉडी, आवर बॉडी इज इंक्रीज टेम्परेचर इनसाइड द बॉडी. तो इंटरनल बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया, तो हम कोप अप कर पाएंगे इन द कोल्ड एनवायरनमेंट. तो आप देखिए कि जैसे आपका घर है, घर को आप एक कंप्लीट बॉडी समझ सकते हैं. आपने घर में एसी लगा दिया, आपने घर में विंडो लगा दी, आपने घर में आपने हीटर लगा दिया. अब आपको ठंड लग रही है तो आपने हीटर चालू कर दिया, आपको गर्मी लग रही है तो आपने एसी चालू कर दिया, आपको हवा की जरूरत है तो आपने विंडो ओपन कर दी, राइट? सो व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग इन योर होम, इन योर होम you are switching on your air condition, or you are switching on the heater, or you are opening the window if you want air. So you are manipulating the temperature as per your need. In the same way, body is always maintaining a perfect homeostatic condition. आपके शरीर का तापमान हमेशा वही रहता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. आप थर्मामीटर से नापोगे, आपको हमेशा एक ही टेम्परेचर मिलेगा. आखिर कैसे? आखिर कैसे हम कुछ भी खाएं, कुछ भी पिए, कभी ठंड में जाएं, कभी गर्मी में जाएं, लेकिन बॉडी अपना टेम्परेचर हमेशा फिक्स रखती है. कैसे? सो बिकॉज बॉडी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हीटर, बॉडी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एयर कंडीशन. हमारे शरीर में हीटर भी है, हमारे शरीर में एयर कंडीशन भी है. इफ वी नीड फायर, अगर हमारा शरीर ठंडा हो रहा है, बॉडी विल स्टार्ट द हीटर. अगर हमारी बॉडी गर्म हो रही है, बॉडी विल स्टार्ट द कूलर, एयर कंडीशन. So this is called homeostasis. The meaning of homeostasis, whatever we eat, but body will remain in the constant form. Whatever, wherever we go, whether we are going in the cold weather or we are living in the hot weather, body want to maintain the homeostatic condition. शरीर हमेशा एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है. इसे कहते हैं होम्योस्टेसिस. होम्योस्टेसिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. व्हाई?
जब किसी को किडनी फेलर होता है तो यही बिगड़ता है. Someone is suffering with a kidney failure. What's happening? The disturbance in the homeostasis of the body. Now, what is happening? Acid level is rising. Okay, alkaline level is rising or going less. तो पता चला एसिडोसिस हो गई या एल्कलाइन नेचर बढ़ गया, सोडियम पोटेशियम इम्बैलेंस हो गया. What is homeostasis? The meaning of homeostasis: the perfect amount of sodium, potassium, calcium, minerals, thyroid hormones, pituitary hormones, everything should be in the right amount. अब देखिए, आपका बीपी हमेशा 120-80 रहता है या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, दैट इज कॉल्ड होम्योस्टेटिक कंडीशन. So this is the normal function of the body. It always maintain the homeostatic condition, and this is done by all the organs. तो जब हम इनकी स्टडी करते हैं, अब आपने कहा यार मेरा बीपी बढ़ गया, इसका मतलब है आपकी बॉडी की होम्योस्टेसिस बिगड़ गई. Now doctor will do the ECG or will tell, oh, this is the problem. The P wave is high. That's why you're facing this problem. So homeostasis means keeping your body always in the very, very right manner. So let's see the next slide here. So what is the importance of the homeostasis? Okay. So for example, in the home, there are two things, the fan as well as the heater. When there is a cold outside your home, then you on the heater. Okay. Then there is a cold outside, there is a heat outside your home, then you switch on your fan. Okay. So to compensate the temperature, the outside your home and inside your home. Okay. So our body is the same processes occur in the body. Okay. When there is too much cold, our muscle gets shiver. जब हमें ठंड लगती है तो हम शिवरिंग होते हैं. ठीक है. So it will help to increase the heat. So हमारी बॉडी में वो हीट ज्यादा प्रोड्यूस करती है ताकि हमें ठंड कम लगे. It will increase the heat, so we feel there is less cold. Okay. And same as the sweat. जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है, when there is a too much heat, तो हमें पसीना होता है, sweating. Okay. So excess heat, बहुत ज्यादा हीट, बहुत ज्यादा गर्मी हमारी बॉडी में से through a sweat, through a पसीने से हमारी बॉडी में से ज्यादातर गर्मी बाहर निकल आती. तो बॉडी को नॉर्मल टेम्परेचर में मेंटेन करने के लिए होम्योस्टेसिस इज मस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट थिंग टू मेंटेन द नॉर्मल टेम्परेचर फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड. नाउ हाउ टू अचीव द होम्योस्टेसिस. ओके. द होम्योस्टेसिस mainly achieved by the body temperature, the water level, the blood sugar level, or in the kidney to maintain the pH, alkaline and acidosis. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी अभी कोविड के समय जब भी कोई पेशेंट एडमिट होता था हॉस्पिटल में, तो सबसे पहले ये देखते थे कि बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है कि नहीं. Many patients was getting great imbalance in the electrolytes. Okay. Sometimes suddenly doctor will tell you, oh, the pH of the body is disturbed. Body is becoming acidic, acidosis. और अगर बॉडी ज्यादा अल्कलाइन हो जाए तो भी प्रॉब्लम, बिकॉज बॉडी शुड बी इन द राइट मैनर ऑल द टाइम. हमारा शरीर हमेशा सही एकदम वही होना चाहिए, एक्यूरेट. सो व्हाट बॉडी इज डूइंग विद द हेल्प ऑफ हमारे शरीर का ब्लड शुगर, हमारे शरीर का पानी, हमारे शरीर का टेम्परेचर, ये सब मिलकर हमारे शरीर की होम्योस्टेसिस को बैलेंस करते हैं. इसको हम धीरे धीरे करके हम आगे भी समझेंगे. सो नाउ लुकिंग द सिस्टम, द डिफरेंट सिस्टम हियर, all the system working together to maintain this homeostatic condition. That is the importance to learn the physiology. तो physiology सीखने का यही
एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है, ताकि हम समझ सके कि भाई हार्ट का क्या योगदान है हमारे शरीर को बैलेंस बनाए रखने के लिए. सो व्हेन वी आर डिस्कसिंग द हार्ट, दिस इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. In the circulatory system, mainly the circulatory system is involving the heart. Okay, the vessels which are coming into the heart and going out of the, जो हार्ट की अंदर आ रही है और हार्ट में से ब्लड कैरी करके जा रही है. अभी वो वेसल्स का काम क्या है कि वो हार्ट में से ब्लड लेके हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन को सप्लाई करती है. ठीक है, अभी इस ब्लड में न्यूट्रिशन होता है, ऑक्सीजन होता है, मिनरल्स होते हैं, जो कि ऑर्गन को सर्वाइव करने के लिए Because when you are going to the doctor, doctor is telling, oh, your blood vessels is blocked, you have to do angioplasty. आपको आपकी ब्लड वेसल्स ब्लॉक है, तो यही ब्लड वेसल्स का जो अध्ययन है वो सर्कुलेटरी सिस्टम में किया जाता है. Then if your blood vessel is flexible, elastic, then if your blood vessel having good protein, then you are healthy. If your blood vessel is having poor protein or not elastic, अगर आपकी blood vessels में प्रोटीन की कमी है और आपकी blood vessel ठीक से elastic नहीं है, the muscle of the blood vessel is not good. So this is the disease. So this study is called the study of circulatory system. Now next is muscular system. In the muscular system, we are discussing about the muscles, कि muscle कैसे contract करती हैं, कैसे relax करती हैं. Many times we are seeing the patient suffering with the muscle sprain. कई बार हम देखते हैं कि patient को muscle sprain हो जाता है. तो muscle sprain क्या होता है और muscle का क्या काम है हमारी body के temperature को regulate करने. So when you get shiver, जब बहुत ज्यादा cold है, shivering कर रहे हैं, तो हमारी मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है. When there is too much cold, okay, our muscle is getting shiver, okay, it will produce the contraction and relaxation. Okay? This will help to increase the heat inside the body and maintain the temperature. Okay, so this is how our muscular system is helped to maintain the temperature inside and outside the body. So like we will be discussing the muscular system. Now we talk about the nervous system. We know brain and spine is the part of nervous system. We are having two types of the nervous system: how the brain is working, how the spine is working, and the nerve is coming out from the brain, then going in the entire human body. तो हमारे ब्रेन से निकलने वाली मोटर नर्व हमारे शरीर को जाती हैं और हमारे शरीर से सेंसरी नर्व ब्रेन को वापस आती हैं. So when the person is suffering with the paralysis, we see there is a problem with the motor nerve. जब व्यक्ति को पैरालिसिस होती है तो उसकी मोटर नर्व में प्रॉब्लम होती है. In the same way, when the person is suffering with the pain like knee pain, back pain, so there is a problem with the sensory nerve. So this study and lots of great things like what is the different part of the brain. हमारे ब्रेन के में पाई जाने वाली अलग अलग बीमारी, जैसे कि मेंटल रिटार्डेशन क्या होता है, ऑटिज्म क्या होता है, और हमारे सेरेब्रल पाल्सी क्या होता है, इसमें आखिरकार ब्रेन की क्या डिसहार्मनी हो जाती है. दिस ऑल स्टडी वी डू इन द नर्वस सिस्टम, राइट. So now the digestive system. The digestive system, it is starting from the mouth to our anal region. In the digestive system, we are including the stomach, the liver, the gallbladder, the intestine, both large and small intestine, rectum, and the anus. Okay. Now, what is the function of the digestive system? The digestive system is absorb the important things, the minerals, the nutrition in our food, and produce the waste product. Okay. तो हम इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम का अध्ययन करेंगे. अब हम आपको क्विकली बता देते हैं यहाँ पर कि इन द डाइजेस्टिव सिस्टम वी विल बी डिस्कसिंग all the glands, salivary glands, and all the glands secreting the enzymes. Okay, जैसे कि endocrine system में हम अध्ययन करते हैं all the glands secreting hormones. In the digestive system we are discussing all the glands secreting enzymes. So हम पता कर सके कि प्रोटीन का पाचन क्यों नहीं हो रहा है बॉडी में, कार्बोहाइड्रेट में डिसहार्मनी क्यों हो गई है, शुगर लेवल क्यों हाई हो रहा है, क्यों पाचन नहीं हो पा रहा,
घी डाइजेस्ट क्यों नहीं हो रहा है, आखिरकार किस तरह की डिसहार्मनी है. So we will be discussing in the digestive system. In the renal system, we will be discussing about the kidney, about the nephron, what is the kidney failure, what is the acute kidney failure, what is the chronic kidney failure, how the kidney doing filtration work, kidney stone क्या होता है, ये सारी चीजें हम इसमें समझेंगे. So now the endocrine system. In the endocrine system, we study about the hormones, how they control our body. Okay, which are the different types of hormone. What are the function of this different organ in the body, and how they are helping to maintain the normal body. And then we will be discussing about the reproductive system, and this is a very important part. Nowadays, the female are suffering with the polycystic ovary, fallopian tube blockages, uterine fibroid. Male is also suffering with the prostate enlargement, erectile dysfunctions and all. ये सब human reproductive system की चीजें हम इसमें समझेंगे. Now the respiratory system. In the respiratory system, we are knowing about how the gases exchanges, how the blood is go and at the which level the gas exchanges occur, how the carbon dioxide is coming out, and how the oxygen is go inside the body. In the same way, so there are multiple system, and we will be discussing the immune system. Immune system is how our body is reacting with the bacteria or virus. हाँ, तो हमारा शरीर का ये हम इम्यून सिस्टम की बात करेंगे कि हमारा शरीर बैक्टीरिया वायरस के लिए कैसे रिस्पॉन्स करता है. When there is any attack, like the attack of the COVID-19, attack of tuberculosis virus, attack of any different bacteria, how our immune system is reacting, what is the defense system, what are the fighter cells, हमारे शरीर का वो फाइटर सेल सिस्टम क्या, वो सब हम इसमें समझने वाले हैं. तो ये तो आज हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट था. अब कल से हम किसी सिस्टम की बात करेंगे. Probably we'll start tomorrow from the nervous system. So enough for today. Let's close the session and see you tomorrow. Bye bye. See you tomorrow.